अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मैरीटाइम या रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एक बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जिसके बारे में आज हमें बता रहे हैं जनाब आमिर बज़िल खान साहब। It was many months of field work and interviewing of community members, experts, a lot of post processing, and the archaeology speaks for itself. But what surprised us and what we learnt that we didn't expect was probably two things. Was the folklore of these places, were the stories that people told of these places, which wasn't the archaeology. We came with one thing in mind, and we realized that there's more here than we initially anticipated. And the ability to tell the story, because folklore is an oral tradition, it is a form of intangible cultural heritage which connects it connects our history to places as well. And so to actually understand these places through the folklore and to be able to use folklore as a historical source is actually something that was quite a challenge for an archaeologist. To actually make sure that that's part of your suite of data sets. That was interesting. But what I want to say, actually, the biggest surprise was the music. The music of Sindh, the music of the Delta, connects you so immediately to the landscape, to the place. And hopefully you'll be able to hear some of that music in the video that we put together. It really does connect to the actual journey from the urban city of Karachi into the remoteness of the Delta. And hopefully you'll get a taste of that. Just the next slide, I've just got a couple of things I probably wanted to just mention. One is people have asked me why is this useful and what can we do with this now that you've got this digital heritage, the documentation, these digital twins, very high resolution recordings of these sites. What can you do with that? Why is that useful? Okay, well, there are tangible, real reasons for doing this. This isn't just, there are probably two real outcomes for us. One was to document these sites for conservation purposes. And I want to give you an example of one of these sites where we did exactly that. So this is, again, the site of Lahiri Bandar. If we go to the next slide. So what we're looking at is an area of, it's about 120 meters to a side. I mean, this is measured down to the point where you can measure every single brick in this structure. So it's extremely detailed. And I will encourage you later, there are orthomosaics that have been printed out. The orthomosaic for this site was 75 gigabytes. So it's extremely detailed. We could have printed this to a 70-meter side to a side, but I think we were limited by the printer. So, sorry? Okay. All right, so moving on to the next slide again. Okay, so this is a corner of one of the sites where we've got, this is the corner of Lahiri Bandar, where we went in February and then we went again in April. And on the surface, it looks quite similar. This is the sort of, I want to say, the southeastern corner of the site. But what you find is that there was some damage done by people who were digging for what they perceive as treasure on sites like this. And this is a perpetual problem with some of these archaeological sites, and it's really important for us to be able to identify when this is happening and where this is happening, rather than anecdotal, yes, maine dekha tha, suna tha ki kuch ho raha hai. We've actually been able to, by using digital heritage techniques, if we go to the next slide, I'll be able to show you where you can really compare and align. This is actually what the damage that was being done, and it's very invasive on a site like this, where they've actually exposed right down to the substructure. Keep going. Right, so we've overlaid the February survey and the April survey, and we've looked at the changes between those two data sets. And you can see this sort of area in red, where those big, deep, rutted holes have been dug. That's showing up. This is not anecdotal. We've got the data to demonstrate it. So this was shared with the culture department, and so they now are aware that these sites are being targeted in this way. I think that's the azan, so I might just pause for a moment. So
फोटोग्रामेट्री के ज़रिए और डिजिटल आर्काइविंग के ज़रिए हम अपनी हेरिटेज साइट्स को आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरा नाम आदिल है, मैं डायरेक्टर हूँ मैरीटाइम रिसर्च का। हमने आज एक लॉन्च किया है एक वेबसाइट का जो इंडस डेल्टा के जो पुराने शहर थे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स अब जो बने हैं उनके बारे में। और हमने क्या है, हमने इन 5 साइट्स को डिटेल लेवल पे रिकॉर्ड किया है 3D टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस तरह हमने एक तो इन साइट्स को एक किस्म के लिए एक डिजिटल ट्विन बना दिया है इसकी प्रेजर्वेशन के लिए। उसके अलावा हम ये 3D एक्सपीरियंस एक बना रहे हैं फॉर द लॉस्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस डेल्टा एक्सपीरियंस, जहाँ आप वेबसाइट के थ्रू इधर जाकर आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप VR हेडसेट के साथ इधर आप घूम सकते हैं, इन साइट्स को देखें। और ये 5 साइट्स में की जो इंडस डेल्टा की जो हिस्ट्री है बताई जा सकती है। ये भंगोर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो काफ़ी कराची के जो लोग हैं उनको मालूम होगा। उसके अलावा लाहिरी बंदर, रत्तू कोट, जाम जस्कर कोट, रानो कोट, ये जगहें जो हैं तकरीबन 2000 साल पुरानी जैसे भंगोर जैसी जगह है। उसके अलावा ये जो साइट्स हैं बिल्कुल पिछले 300-400 साल तक ये चलते रहे। तो इनकी जो स्टोरी है, इंडस डेल्टा की जो स्टोरी है, हम ये लोगों को यंग पीपल जो हैं उनको भी थोड़ा सा इसका अवेयरनेस बढ़े, उनको भी इसका पता चले और फिर ये 3D एक्सपीरियंस के थ्रू ये एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसमें इन साइट्स में ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज का बहुत असर पड़ रहा है। ये सी लेवल राइज की वजह से ये साइट्स बिल्कुल ही डूब रही हैं। तो इनको डॉक्यूमेंट करना, इनकी रिकॉर्डिंग अभी करना लाजमी था, वरना ये 30-50 साल में ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। इसके अलावा ये कुछ साइट्स जो हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उनसे भी डैमेज हो रही है। तो कुछ लोग जाके इन साइट्स पे जाके वो खुदाई करते हैं, ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं। तो ये चीज़ें ये भी मसले हैं इन साइट्स की हिफाजत के लिए, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो इन साइट्स को बनाना एक ये भी मकसद है कि ताकि आगाही हो लोगों को कि हम किस तरह से अपनी कीमती या कदीमी विरसे की जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, ताकि लोग या आला हुकाम तक बात पहुँचे, ऐसे ही। जी, आई थिंक ये सबसे पहले तो अगर आप ये इन साइट्स में से देखें तो भंबोर तो एक है प्रोटेक्टेड साइट, वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेटेड साइट है, ये तो काफ़ी लोग इसको जानते हैं। मगर ये बाकी जो साइट्स हैं अभी तक इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, ये ना तो कोई हेरिटेज लिस्ट पे लगाई गई हैं। तो लाजमी है कि इनको एक स्टेटस मिले एज प्रोटेक्शन के तौर पे, लीगली ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिर आगे जाकर ये इस पे वो इंटरवेंशंस हो सकती हैं। थैंक यू। इस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया है कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए हम इनको सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।